your experiences on dating apps और क्या क्या आपने try किया है and how has that been and would you advise people dating apps? Yeah, for sure. I mean, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है तो of course go on dating apps, see क्या है. I would still prefer cold approach, meeting people in person, going to a club or a mall and doing approaches and starting conversations in real about life. this cold approach thing also. Ki, like if I want to approach a guy in a gym, let's say. Yeah. How do you do that? Because in a party or let's say in a place like summer house, it's much more easier to do that. How do you approach a guy at summer house and at a party? Let's cover that pehle. You just go up to them, tell them you find them attractive. No. As a girl, नहीं. नहीं. How do you do that? I'll tell you. अगर ये हमारा ये बंद हो जाए पहले तो क्या हो गया? यस इस एरिया में आते हैं स्पीड आ जाती है हमेशा. I wouldn't advise you to do that. I would advise you to create opportunities for the guy to start a conversation because I believe अगर एक बंदा तुम चलो ठीक है वो अप्रोच कर नहीं पा रहा है क्योंकि फट रही होती है ठीक है बंदों की I know but what girls can do is they can make it easier for the guy to approach them. And let him still take the lead because अगर एक बंदा सुकृति तुम्हें अप्रोच भी नहीं कर पा रहा है सब कुछ तुम्हें करना पड़ रहा है बात भी तुम ही कर रहे हो सारा बर्डन तुम ही ले रहे हो तो बैंड जो चूतिया ने करा क्या है फिर राइट why would you want to be with a guy जो एक conversation भी hold नहीं कर पा रहा है. But how do you initiate a conversation? मैं बताता हूँ. So what you do is you maybe at a bar or something go ask for a lighter. Yeah. Or like look at him when he looks at you एक दो बार तीन बार हो जाए then maybe smile pass कर दो. Yeah. ठीक है and then अगर वो let him come to you. Alright, let him come to you. उसमें फंसो ही मत कि तुम जा रहे हो because वो वही बात है वो he'll take you for fucking granted and everything and let him chase. Let him so सारी बात नहीं इन्वेस्टमेंट की होती है. अगर वो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना तो अपने वो सीन करते नहीं है सर डॉग देयर seems like है ना हरामखोर हट भी नहीं रहा है. That's my house. This is literally your house. यहाँ से मैं आई थी उधर. अच्छा मैं यहीं आ जाता. But anyway, so what I'm saying is you want to create opportunities. So smile pass करती. Yeah. जाके you borrow a lighter. Yeah. You ask for him for a smoke. Yeah. Right. So then you're there, and then let him like talk to you, and then be sweet to him. Right. Yeah. Don't be cruel to him. You're not anyway. Be sweet to him, but let him. bitchy नहीं होना. Let him put the effort. Let him take the first move. Alright, थोड़ा मेहनत करवाओ उस बंदे से भी. अच्छा. फ्री में ही जाके मतलब ये लो भाई ये लो और तुम कुछ मत करो. बस ठीक है. चलो clearly why my scene is so raw so not अब बात करते हैं जिम के बारे में. हाँ. Similar stuff in the gym. Alright. Can you help me with this exercise boy? Like that stuff. Yes. जब बंदे बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी फॉर्म करेक्ट कर दूं तो हर बार वर्क नहीं करता because the girl might or may not be interested but the girl can do it और उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है. अरे वो बंदा अगर बोले कि ट्रेनर को बुलवा देता हूँ तो ठीक है ट्रेनर को बुला दे. See, एक तो why are we always assuming negative things? तो ट्रेनर को क्यों बुलवाएगा? If you're stroking my ego, मैं ट्रेनर को क्यों बुलाऊंगा? You can ask him, dude, I really like your shoes. कहाँ से लिए? Because so I was working out. Yes, this is a very nice conversation starter. I like your shoes. So I wear barefoot shoes in the gym, and when I'm working out, I take them off. Yeah. Barefoot भी. So I work out barefoot in the. तो फिर जब मैं योगा एरिया में होता हूँ जहाँ पे स्ट्रेच वगैरह कर रहा हूँ there are girls around so a couple of times one or two girls have been like dude I mean I'm making space for them sort of like I'm being cordial I'm not even trying to be like I'm gonna pick up a girl out here. Yeah. It's just like she needs some space I make some space I just see that she's comfortable सब कुछ ठीक है and generally she's like oh where did you get your shoes or why are you working out barefoot or if she's trouble हो रही है उसको maybe she doesn't know yoga mat कहाँ से उठाना है so I'm just gonna tell her कि कहाँ से उठाना है right. Basic simple चीजें nothing special और उसमें वो conversation start हो जाती है. Right. So if let's say you're on the treadmill you don't know how to start it there's a guy next to you like dude can you help me out with the treadmill अब उसमें don't think of it कि आज में हमें बहन जो सुहागरात में और शादी आज ही करनी है ठीक है आज बात हो गई उसने तुम्हारा start कर दिया smile at him don't even ask his name let him ask your name. Alright let him talk हो गया and then anytime you see him next time smile at him you acknowledge the person right क्योंकि वो आसपास है smile at him फिर वो कभी ना कभी खुद ही आके बात करेगा hey what's up let him do that भाई मेरे को बहुत पेशेंस पुलिस वाले मास्क नहीं है हमारे पास हम जा ही नहीं रहे इधर. हाँ उधर चलो हम पीछे भी मुड़ सकते हैं वैसे वही मुड़ रहे हैं हम नहीं समर हाउस के आगे से घूम के आते हैं. हाँ oh god तो ideally it plays a long game and उसके बाद थोड़ी बात हो जाएगी right ideally if the guy likes you खुद बात करेगा तुमसे and after that just be there and
let him talk or whatever. Whenever you're entering, like, hey, just like smile at him. Yeah. He's gonna smile at you. But alright, he's gonna say hi to you. One more thing to add here कि जैसे let's say even ये जिम हो गया या ऐसा कॉलेज का सीन हो गया where it's like a रोज का इंटरेक्शन है. हाँ. ठीक है. पार्टी और समर हाउस ऐसा कुछ सीन है तो वो है कि एक बार दिखा शायद हमें जिंदगी में नहीं मिलेगा वो इंसान. हाँ, तो ना मिले. हाँ नहीं अब जैसे जिम वगैरह सीन है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस goes wrong. वो बंदा तुम्हें अगले दिन मिलेगा. That could there be is an nothing that is going wrong. Okay. There is nothing that's going wrong will helping you with the treadmill or your positioning or asking for shoes. There is literally nothing going wrong. Yeah. कुछ embarrassment या कुछ. क्या embarrassment? तुम्हें help चाहिए. I think about this a lot. So really, I don't think there's any embarrassment there. If the conversation the conversation the guy is going to start now, he's the one who's going to feel embarrassed. And why he's not going to be approaching you is because he's going to feel embarrassed, so you make him comfortable. It's okay. Right. I don't think there's anything embarrassing out there or anything wrong with you just naturally. मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं लड़कियों को योगा मैट या कुछ भी उनको हेल्प चाहिए होती है मैं कर देता हूँ. And they ask me where I got my shoes or why am I working out barefoot, anything like that. Or maybe I'm just smiling या मेरा music I'm just dancing around in my own zone. Yeah. And I'm not going to think यार पता है लड़कों को लगता है लड़कियां बेदिल होती हैं, लड़कियों को लगता है लड़कों में दिल नहीं होता है और वो सब मीन होने वाले हैं तुमसे. And that's just a human tendency. हमें लगता है सब हमारे साथ मीन ही होने वाले हैं, but नहीं होते हैं लोग. People are sweet. Yeah. People are nice. Specifically in the gym, if you're going to a gym, वो बंदा भी तो यही सोच रहा होगा कि मेरे को रोज यहाँ पे आना है. मैं इस लड़की पे हिट करूंगा तो पता चला मेरे को जिम से ना निकाल दें, ये लड़की चिल्ला ना देगी भाई मेरे को छेड़ रहा है. Yeah. Everybody thinks that. उसके चक्कर में साला कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाता है. That's true. किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना. So the first move, don't make the first move like yo dude you look so cute on that treadmill. Create opportunity. Do not give your intentions till the time the guy isn't clearing out his intentions. Alright, अपने intention मत clear out करो. Of course, look at him in the flirty way, naturally be attracted to him and everything in those signs and subtle way. यार I try कि बंदा मेरे से आके बात करे but वो नहीं हो पाता. So I have to. तुमने कभी सिगरेट मांगी, तुमने कभी ट्रेडमिल पूछा, जूता पूछा, कभी तुमने कुछ भी, तुमने कभी I mean ड्रिंक के बारे में पूछा, तुमने कभी बोला डूड, तुमने कभी बंदे को बोला योर स्कार्फ इज रियली नाइस? नहीं, कभी नहीं बोला ना. तुमने सीधा जाके बोला तुम क्यूटी हो. हाँ, वो नहीं वर्क करेगा. तुमने दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ पेशेंस एंड बैड सोशल.